पोर्टर्स 5 फोर्सेस, इन सब के पॉइंटर्स आप वहाँ पे लिखोगे। नाउ इसके साथ इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। आप जब बिजनेस स्टार्ट भी करते हो, व्हेन एवर स्टार्टिंग अ बिजनेस और व्हेन एवर यू आर doing some kind of investments, so you when you will be doing consultation to a company, you will be seeing these few pointers. Bargaining power of the buyers. Let's see. Number 1, क्या बायर्स के पास बार्गेनिंग पावर है? अगर है तो जोमेटो की तरह कंडीशन हो जाएगी आपकी। हाउ? जोमेटो को डिस्काउंट देना पड़ता है कितना ज़्यादा। अगर जोमेटो डिस्काउंट बंद कर दे और स्विगी डिस्काउंट ज़्यादा दे दे, विल यू स्विच? एब्सोल्युटली। देर इज़ नो लॉयल्टी गाइज। आज मैं जोमेटो से लूँ, स्विगी से लूँ, कहीं से भी लूँ, इट डजेंट मैटर टू मी। प्रोडक्ट आना चाहिए। वट आई लव टू ईट, फॉर एग्जाम्पल आई लव टू ईट बिरयानी, मैं कहीं से, होटल तो सेम है, डिलीवरी कहीं से भी हो सकती है। सो ओवर हेयर द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स इज़ वेरी वेरी हाई, and because of that Zomato is suffering, because they can't decrease the discounts just like that, because they were burning the money. On contrary, एयरलाइन इंडस्ट्री देख लो, आपने गोवा जाना है, यू आर इन एमरजेंसी गाइस, यू कांट डू एनीथिंग, यू डोंट हैव द बार्गेनिंग पावर विद एयरलाइंस। फ्लाइट का रेट ज़्यादा है, ज़्यादा यू हैव टू पे। सेम गोज विद जियो, यू नो, टुडे तो चलो जियो हैव सम कॉम्पिटिटर्स, बट बिफोर दिस दे वर नॉट हैविंग एनी कॉम्पिटिटर्स गाइस। जियो अगर रेट बढ़ा देता, व्हाट कैन यू डू? यू हैव टू पे, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव द बार्गेनिंग पावर। सो इफ़ योर प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, no one can else copy that, and it is a monopoly, I would say, then the company is having more power. But if your product is easy to make, right, so then it's become very easy for the buyers to switch. There is no loyalty as such. I hope everyone is with me guys. Towards the end of the class I will be sharing few websites as well with you, right? Then comes the bargaining power of the suppliers. Guys, अपने दिल से just answer one question, keeping the patriotism aside. Can we really cut off China? Means हम लोग कितना स्वदेशी मूवमेंट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं. Can we really cut off China? Can we really become self-dependent? I would say it is near to impossible. Means I can't even imagine. I really want you to do a small case study research on China itself. यूट्यूब में वीडियोज़ ही देखना गाइज, दे हैव रियली रीच्ड वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. they are the competence which they are having, you can't ignore them. So over there, if we are the suppliers and we are, if China is a supplier, we can't, and it is having more power, right? We can't ignore it guys. Not only us, it's any country in the world is completely dependent on China. So China is having more supplying, they are having more bargaining power over here. So if the raw material is limited or whatever you are making, that is so strong that no one else can do it guys, no one can substitute, nobody. And if it is so, otherwise तो हम लोग, अगर चाइना नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश होता या पाकिस्तान होता, we could have easily changed the country, but it's not in the case of China guys. Now threat of new entrants, this is very simple guys. If you want to start a new business, think about a business which is so difficult for others to enter. Can you start an airline industry? I would say no, you can't, because it's so complex. Machinery is so complex to understand, the process is so complex. कोई कंपनी घुस ही नहीं सकती. There's so many barriers of entry. You can't start a car manufacturing company. It is so complex to understand. एक कार में इतने स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इतने स्पेयर पार्ट्स, मीन्स यू कांट इवन इमेजिन, thousands of spare parts. But you can start a dhaba. Anyone can start a small restaurant, because over there the entry barrier is so less. I can start a restaurant, you can start a restaurant, anyone can start. So if there is any entry barrier, then it is good for a business. तो जब भी आप इक्विटी रिपोर्ट बनाओगे, you will be seeing these entry barriers for the product of the companies. आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखोगे and see the barriers कि कितना डिफिकल्ट है उसको बनाना. See the bargaining power from where the raw material is being taken. From what is the bargaining power of the buyers. You have to analyze guys. रिसर्च रिपोर्ट बनाने में 6 से 8 महीने लगते हैं अगर आप पहली बार बना रहे हो and you don't have any resources. Once you will get into any investment bank like Morgan Stanley, या कहीं भी तुम चले जाओगे, like McKinsey में चले गए, वहाँ पे आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे.
लाइक ब्लूमबर्ग एंड ऑल दिस पेड पोर्टल्स, जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट बनाने इज़ वेरी इजी, यू विल गेट ऑल द डेटा ओवर देयर, आपको बस वो कंपाइल करना होता है. बट राइट नाउ यू डोंट हैव एनी पेड सब्सक्रिप्शंस, राइट, एंड आई डोंट एडवाइज यू टू टेक एनी पेड सब्सक्रिप्शंस, बट आपको ये सारा डेटा खुद ढूंढना पड़ेगा एंड एक्सेल में नीचे लिखना पड़ेगा कि रिसोर्स आपने कहाँ से यूज़ किए हैं. यू हैव टू गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम दिस वेबसाइट, फ्रॉम दिस रिसर्च रिपोर्ट, लाइक दैट. बट you have to make this for the company which you are making, right? I hope this is clear to everybody. Now, threats of the substitutes. क्या आपके प्रोडक्ट को कोई सब्सिट्यूट कर सकता है? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सब्सिट्यूट्स, टी एंड कॉफ़ी. कॉफ़ी महंगी है, टी भी लेंगे, टी महंगी, कॉफ़ी पी लेंगे, लाइक दैट. देयर शुड नॉट बी एनी सब्सिट्यूट फॉर योर प्रोडक्ट. And competitors and rival means how what is a rivalry in the market? Swiggy, Zomato, Uber, Ola, I would say. Uber was having so much funding ki eventually guys, Ola just switched. ओला ने स्विच ही कर दिया अपनी बिजनेस मॉडल को. व्हेन यू आर कंपीटिंग विद बिग जायंट्स दे विल ईट यू गाइज. सो इट्स बेटर कि ऐसे बिजनेसेस में घुसें जहाँ कॉम्पिटिटर्स कम है, बिकॉज यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स एंड इट विल रियली कॉस्ट यू वेरी हाई. सो यू नीड टू सी विद इन अ बिजनेस कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर दे हैविंग सम काइंड ऑफ थ्रेट्स और नॉट. और इफ़ यू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, तो क्या ये चीज़ें आपके बिजनेस में आ रही हैं कहीं से? जस्ट मेक एन एक्सेल शीट और वहाँ पे ये पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे आपको गाइस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.